So after section 54, we are moving towards section 55 here. So it is talking about the preference shares now. Got it? Preference shares. And more of it is talking about the issue and redemption of the preference shares. So it is discussing more about redemption of the preference shares and how to issue it. It doesn't talk anything about the types or anything. Okay? So basically, we have these many questions to face under section 55, right out from exam point of view. Section 55, which talks about obviously preference shares. All right. So first is the features of preference shares. ये आपका पहला टॉपिक होना चाहिए. Preference shares. Second is how to issue. Third is provisions regarding redemption. Provisions regarding redemption. And fourth one is sources and company. If company is not in the position to redeem the preference shares. So these many points आपको करने और ये हो गया तो ये टॉपिक ओवर. ठीक है. All right. So let's begin with the story, what it is trying to say here. Features of preference shares. Assume that once the company issues the preference shares, nothing is mentioned whether it is equity or preference. कुछ लिखा नहीं by mistake. So as being the analyst, how would you come to the conclusion that the said shares are not equity shares? So what are the features based on which you will come to know that they are not equity but they are preference? Law has actually provided here, I would say, the two features. If you find these two features in the prospectus or in the contract, it would be recognized as preference shares. Point number one, first preference, first preference in dividend. And second feature is on dissolution. First preference on capital repayment. So when you find these two conditions in the agreement, even if the heading is not mentioned, you will assume this as what? Preference shares. How to issue? Preference shareholders are also nothing but the capital holders, and therefore they are also included in the definition of the members. Yes, preference shareholders are the members. In fact, they do have the voting rights, but initially only on the matters in which they are personally interested. But if the dividend is consistently not paid for the 2 years, then they can vote on each and every matter. I think that's what already we know. वो हमें पता है, आराम से पता है. ठीक है? So again, guys, the same formula I want to add in, like you are inviting someone who is outsider. So consent of the homeowner is necessary. So guys, the point is how to take the consent of the shareholders by way of passing special resolution. So yes, special resolution is mandatory when we issue the preference shares to the public. And remaining some points are there that what should be included while you are issuing the notice, then all the details like number of shares, the price, the quantity, the class, the terms, the conditions, whether they are cumulative, non-cumulative, renewable, then up to what extent, participating, non-participating, everything you have to prescribe in details
under the explanatory statements of the preference shares resolution. आपको बताना पड़ेगा कोई रास्ता नहीं, ठीक है। तो मेजर डिस्कशन जो यहाँ पे होने वाली है ना वो इसके ऊपर होने वाली है, रिडिम्पशन. So based on redemption, all of you know that there are two types of preference shares. The first one is redeemable and second one is what? Irredeemable. Yes or no? So as you know guys, based on the redemption we have these two types of the shares. The first one is what? Redeemable and second is irredeemable. Redeemable and irredeemable. Okay, in India, is it possible to issue irredeemable preference shares? That is the first question. Let's say if any company wants to go for the preference shares, what it doesn't want to pay forever till the life of the company, it wants to hold the money. So in India, my dear students, irredeemable option is not available. So no matter, I would say, while we understand the classification, we say that there are two types, redeemable and irredeemable, but from the Indian law system, irredeemable preference shares are not allowed. It is unlawful if you issue it. So company must have to go for the redeemable preference shares, no option at all. But here the two questions comes, what is the maximum period of the redemption and what if company fail to pay it? Okay? So if I ask you the tenure of the redemption, tenure of redemption. So again guys, I have the two options to go for. This is the option number one and this is the point number two. Like two classifications I do have. First, what it says that companies which are not included in infrastructural project. Companies not in infrastructural project business. Project. And obviously the second should be the companies which are in infrastructural project. Okay? So quickly let's go about this. Companies which are not in infrastructural project, the maximum period for which you can take the preferential is any guesses? Exactly, it is just the 20 years. You cannot go beyond 20 years. And in fact, while passing that special resolution, you have to mention it that, ladies and gentlemen, the maximum period is 20 years. That you have to specify there. But what if you are included or involved in the infrastructural project? Then law says it is 20 plus 10. Purposefully, I have mentioned it is 20 plus 10. It is not exactly 30. Technically, it is coming 30, but calculation wise, this 20 and 10, both the numbers has a certain logical sequences. When I talk about 20, so no doubt, the same 20 years like this you can enjoy unconditionally according to the contract. But this 10 years, इसका अपना खास एक मतलब है. For this 10 years, what law says the 21st year onwards, 21st year onwards, you have to start paying at least 10% of the preference shares back to the shareholders. So 21st year onwards, this also can be the part of your MCQ that how much at least you should start redeeming to your preference shares. Answer to that question is at least 10%. तो कम से कम 10% आपको देना पड़ेगा. कम से कम 10% आपको वापस देना पड़ेगा. So ultimately, you tell me one thing: this 10 years, it is the time to enjoy or it is time to pay? Can I say this 10 years is not a time to enjoy, but it is given just like the EMI facility. So that just max to max within 10 years, you can just wipe up all of your preference shares. तो ये 10 साल आपको भाई कोई एंजॉय करने के लिए नहीं दे, ईएमआई है, हर साल 10% आप एटलीस्ट देते जाओ. Got it? So that is what. But these facilities allowed to be enjoyed only and only by the companies which are involved in what kinds of business? Infrastructural projects.
And it's not like any kind of infrastructural project. Let me tell you, if you see the company law at the end, there are some schedules. Look at Schedule 1, Schedule 1, Schedule 1. Are you able to see this? This is Schedule 2. This is, I would say, Schedule 3, right? Schedule 3 is nothing but, formatting of the balance sheet, like financial statement. After then, this is Schedule 4, then Schedule 5. And look at the Schedule 6 here. What is written? So guys, projects what are mentioned here will be considered. It is not like you are constructing one home, so can I get the 10 years EMI facility? ऐसा नहीं मिलता आपको. आप उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने चाहिए जो स्केड्यूल में बताया गया है. In fact, these schedules also are part of the act. So whatever mentioned over here, you have to take them as serious as like the provision. Make sense or not? So look at guys, lot of things are given. हाँ, 5. या अभी अभी काम करो, इनको मैं भी ब्रेक दूंगा लंच का, तो आ जाओ तब हम डाउट सॉल्व कर लेंगे. 1 घंटा मिलेगा हमको. 5 बजे के बाद डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा, मुझे ऑफिस का थोड़ा काम है. अभी थोड़ा वेट कर, कैबिन आगे उधर सीधा उधर ही आ रहा हूँ. ये टॉपिक खत्म करने के बाद. ठीक है. हाँ जी. आधे घंटे, हाँ हो सके तो तुम देख लेना जल्दी थोड़ा. अगर टिफिन लाया तो अपने साथ ही करेंगे, बैठ जाना कैबिन में. मुझे कुछ नहीं. ठीक है, आ जाओ करके आ जाओ जल्दी से. ठीक है. Am I clear? So देखो, transportation like roads, national highways and all that, rail system, ports, aviation, airports, logistic services, agricultural जिसमें storage facilities. So they have given the list of infrastructural projects. So you cannot take on your own. नहीं नहीं, I want to construct a small house, so let's go. It is not like that. ठीक है? Now sources part I will take you later on. I don't want to अभी नहीं करना है उसको हम बाद में करेंगे. ठीक है? तो ये रिडीम्शन पीरियड समझ में आ गया आप लोगों को. लो, अब हम सोर्स हम बाद में करेंगे, पहले इस पॉइंट को कर लेते हैं. इफ द कंपनी इज नॉट इन द पोजीशन टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स, तो क्या करोगे? इनफैक्ट दिस क्वेश्चन वाज देयर इन वन ऑफ द ICAI's क्वेश्चन पेपर. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हिच अटेम्प्ट, बट वो था. बात ऐसा है कि दैट अज्यूम देयर इज अ कंपनी एंड कंपनी हैज टेकन 100 करोड़ रुपीस प्रेफरेंस शेयर्स. 100 करोड़ रुपीस प्रेफरेंस शेयर्स. It was promised to repay after 10 years. 10 years lapsed and company is facing the financial crisis, no funds. Company seeks your advice. Is there any remedy to get out of this problem? Explain as per section 55. You want to redeem, your intentions are good. I'm not challenging your intentions, but you don't have money. तो अब क्या करोगे? पैसे नहीं है आपके पास. जब पैसे नहीं है तो क्या करोगे आप? बात ये है. जब पुराना लोन नहीं दिया भाई और नया उठाने जाओगे तो कौन गधा देगा? वो आपकी क्रेडिट देखेगा या नहीं देखेगा? पुराना 100 करोड़ नहीं दिया और नया देके पुराना पे करना है, मतलब पुराने की टोपी अब नए को पहना रहे हो. देखो अभी भी मैं कहता हूँ, जब हम कंपनी की बात करें, so in the company's existence of company is very important. Maintaining the survival of the company is very important. At any cost, anyhow the company remains survived. देखो सीधी सी बात है, जो जिंदा रहेगा वो आगे बढ़ेगा. Restructuring, it's very extreme step. Involvement of the RBI guidelines and a lot of things. In fact, you can say amalgamation, capital reduction like things, but that is something what is close to winding up. अभी उतनी खराब हालत नहीं है. Company is in the working condition, but they are having the lack of funds. But company has the potential that in future, if you allow me some time, I can definitely perform well. I can earn the good profit, and out of that profit, I will pay your money. That is what. How will you convince? Because there are 100 crore rupees, let's say more than 1,000 preference shareholders. How will you convince each and everyone?
So some good authority is needed to supervise, on which at least preference shareholders do have the trust. And it is there, guys. So look, I'm telling you, if company is not in the position to redeem the preference shares, then law has provided the solution. उन्होंने कहा कि following two conditions need to be satisfied. If these two conditions are satisfied, then what will happen? Existing preference shareholders would be assumed as paid. Assumed as what? Paid. And in place of the old preference shares, new preference shares will be released. So this is nothing but the renewal process. What is that? If these two conditions are satisfied, old preference shares would be assumed as paid, and in place of that, new will be assumed as taken into place. So generally you see, understand, this is what the journal entry will be passed according to accounting principles. Suppose in the balance sheet you have old, I would say preference shares. आपके पास old preference shares यहाँ पे, suppose 100 crore rupees. Who is your like creditor? This preference share. So this will be considered as squared up. Squared up, like paid off. In place of that, the new will be considered as come to the picture. So journal entry ऐसे होगी. Old preference share debit to new preference share. Amount बदलेगी नहीं भाई. Are you getting me? 100 and 100. So you try to understand the logic behind this. If you have taken, let's say, a 1 lakh rupees loan from the bank, that 1 lakh rupees you are just putting in your balance sheet, and let's say it is almost 1 year you have not paid it. Will bank take the action against you or not? But what if, guys, in order to pay the old one, you are taking the new one? तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो सेम ही रहा. पहले भी लाख रुपया उसी बैंक को पे करना था, अब भी 1 लाख रुपए उसी बैंक को पे करना. बट पॉइंट इज, दूसरे मेथड में लीगल केस नहीं आएगा. बेटा फंजी नहीं, इंटेंशंस देखो, कानून में आपके इंटेंशंस मैटर रखते हैं भाई. तो क्या लगता है ऐसा नहीं हो रहा है मार्केट में? क्यों लोगों की बैलेंस शीट में 14,000 करोड़ के लोन्स दिख रहे हैं? यहाँ से लेके वहां, वहां से लेके यहाँ, ऐसे ही तो चलता है. और जब स्टक हो जाए तो लंदन तो है, भाग जाओ. हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर ये अलाउड नहीं किया तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? बिजनेस में आप पैसा पे ना करो वो फॉल्ट नहीं है, आपके इंटेंशंस पहले से ही ना पे करने के नहीं होने चाहिए. फ्रॉड की सजा है, लॉस की सजा नहीं. So you try to understand that if you have the debt of 20,000 crores and you, due to pandemic, your company faced huge losses and just because of that you couldn't pay, कोई सजा नहीं है. Recent example, Mr. Anil Ambani, on record I'm saying, companies are bankrupt. Some companies couldn't pay the debt, but his personal assets are not touched, limited liability, and still he's not in the jail. क्यों जेल में डालोगे? फ्रॉड किया नहीं. I wanted to do a good business, but somehow I couldn't do that due to some external factors like pandemic, government policy changes. Where is my fault? Why will you put me in the jail? Now to pay the loans of the bank, should I sell my kidneys or should I die? क्या suicide कर लूँ मैं? I'm the citizen. When I had the profit, I paid the part of my profit to the government also in the form of tax. अब जब मेरी हालत खराब है तो गवर्नमेंट तो टैक्स नहीं देने वाली वापस. कम से कम मुझे जिंदा तो रख सकते हैं ना. छोड़ो. तो ये गलत नहीं है. तो अगर ये जर्नल एंट्री अलाउड की गई तो isn't it just like ऑक्सीजन? अरे भाई थिंक लाइक दैट. ओल्ड रिप्लेस कर दिए जाएंगे बाय न्यू वन. isn't it the oxygen? It is the oxygen, but the point is if you want to get this oxygen of the renewal, you have to satisfy these two conditions. Condition number one is, write down. Condition number one is like you have to pass what? Special resolution. Without that you can't go ahead. And second is, guys, you have to get, so not a special resolution, my bad, मेरी गलती बचा.
because special resolution is the thing where equity shareholders can vote. This is the pure matter of, तो उनको क्यों ऐड करें? So special resolution is not that actual words are. I'm sorry, I want to take my words back. It is that take the consent of at least 3/4 of preference shareholders. Take the consent of at least 3/4 of preference shareholders and take the approval of tribunal. Do you know who's the tribunal? Equivalent to High Court today. So everything must have to get done after the approval of tribunal. When these two conditions are satisfied, then your old one would be assumed as repaid, and in place of that, the new one will continue. Then fine, by anyhow you have to arrange the funds by selling off your assets, and you cannot go for winding up. हमारे हिंदी में एक कहावत है साहब, कुछ नहीं होने से अच्छा है कुछ होना. लिक्विडेशन में गई और अंत में पैसे नहीं बचे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसे हो गए तो मिलेंगे ना. लिक्विडेशन में क्या है? Assume your entire assets money got exhausted just by paying the external liabilities. अब पैसे नहीं बचे, अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दोगे? तो वैसे लॉस तो है ही ना, इससे अच्छे एक चांस दिया जाए. क्या ऐसे नहीं सोचा जा सकता? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, या तो मैं कंपनी बंद कर दूं जिसमें चांसेस आर वेरी लेस दैट यू विल गेट योर मनी बैक. लॉफुली डोंट हैव एनी ऑप्शन. अब मेरे पे केस नहीं कर सकते, वापस लो, कहाँ से ला के दो, अपना सीना छीन लो, क्या नहीं हो सकता? और दूसरा ऑप्शन, मुझे एक और चांस दो. और वो भी ऐसे थोड़ी मांग रहा हूँ, ट्रिब्यूनल खुद इन्वॉल्व है अप्रूवल, और वो पागल थोड़ी ऐसे दे देगी. ट्रिब्यूनल विल असेस व्हाट योर इंटेंशंस. तो तुम समझो भाई, देश चलाना है. अब ये अपने सेल्फिशनेस पे बताओ. वो भी होती है ना कोई, नहीं एक चांस जेन्युइन उसकी कंसर्न है भाई, पेंडेमिक में धंधा नहीं चला, उसकी क्या गलती है? तो इंसान में इतना तो सेंस होना चाहिए. नहीं यार, समय खराब है, बंदा खराब नहीं है. वो आएगा, वो अलग से आएगा, वो सोर्सेस में पढ़ा होगा अभी. Have you understood what I am trying to say? Hello? Have you understood what I am trying to say? Fine. So these two conditions need to be satisfied. So over here, I will say almost 90% of the preferential discussion, whatever I wanted to, has been completed. Now come down to come up to this point, sources. ठीक है? Okay, ये point समझ में आ गया आप लोगों को? Before I go ahead, I think I should show you that. Hold on. This is, I would say, section 55. अरे देखो यहाँ पे लिखा है सी सेक्शन 55 एंड सेक्शन 186. क्यों? बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट वर्ड कहाँ पे यूज हुआ है, और 55 क्या है? हाँ वही तो है. तो देखो इससे क्या पता चलता है, शेड्यूल 6 में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स की लिस्ट दी गई है, दिस इज यूजफुल टू सॉल्व दिस टू सेक्शंस 55 एंड 186. 186 आपके सिलेबस में है नहीं. ठीक है, लोन देने की बात है, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स. आई डोंट वांट टू गो फॉर दैट. लेट्स क्लिक ऑन द वर्ड 55. तो देखिए इसकी मजा ये कि जैसे आपने उसको क्लिक किया सीधा वही 55 खुल जाएगा यहाँ पर अलग विंडो में. लेकिन इससे अच्छा हम यहीं से खोल देते हैं. ये अरे 54 हाँ ये रहा, वही सेम टू सेम है. ठीक है. सो ओवर देयर आई वांट यू, देखो गाइस, where a company is not in a position, and this is given under 55 subsection 3, not in position to redeem any preference shares or to pay dividend of the preference shares, if any, on such shares in accordance with the terms of the issue, it may with the consent of the holders of the 3/4, not a special resolution, sorry वो मेरा गलती था. क्या लिखा है यहाँ पे? 3/4 का होल्डर का कंसेंट इन द वैल्यू ऑफ द सच प्रेफरेंस शेयर्स एंड विथ द अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल. ठीक है, मेड बाय इट इन दिस बिहाफ
issue further redeemable preference shares equal to the amount due, including the dividend thereon, in respect of the unredeemed preference shares, and on the issue of such a further redeemable preference shares, the old one unredeemed preference shares shall be deemed to have been redeemed. तो क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? आप नए इश्यू करो, जैसे नए आपने इश्यू किए, पुराने रिडीम हो गए हैं, हम उसको ऐसा मान लेंगे. So I think I salute the man who wrote this wonderful provision that in the law itself, such arrangements are given that if you don't have money, then how to go ahead into that. तो लाइफ में कभी अगर ऐसी कोई कंपनी आई मेरे पास, तो मेरे पास अभी सॉल्यूशन रेडी है. अच्छा फीस छापूंगा वहां पे, कुछ नहीं करने, पैराग्राफ पेस्ट करके दे देना, इतना इतना करना, खत्म करूंगा. ठीक है. So obviously, my dear students, that while giving this consent, tribunal will definitely take care the interest of those people who have not given the consent. They should be taken care, like they should be given some other additional benefits. If they do not agree to go for the new one, either cash will be paid or security will be promised to those dissented shareholders, or they will be given their preference share maybe get converted to equity or may get converted to other loans, something like. तो कुछ ट्रिब्यूनल उनको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ देगा. ये बिल्कुल वैसा कि जो बच्चे रो रहे हैं तो उनको कुछ चॉकलेट्स देनी है ताकि वो रोना बंद करें. तो ट्रिब्यूनल को उन बच्चों को संभालना है जो डिसेंटेड है. एम आई क्लियर? ठीक है. नाउ लास्ट पार्ट बिफोर वी प्रोसीड टू द लंच. ब्रेक में कुछ खाया नहीं खाया आप लोगों ने? थोड़ा कुछ किटकेट. दो लोग सिर्फ? सिर्फ दो लोग आप ही? ठीक है यार, क्या बात है. कभी यार हमको भी बुलाया करो भाई, हम भी आएंगे. सालों हो गए, पता नहीं कब लास्ट बैट पकड़ा था मैंने. नहीं, अच्छी हैबिट है, अच्छी हैबिट है, कम से कम दिमाग उसमें एक्टिव रहता है. ठीक है. चलो हम बात करते हैं सोर्सेस. बट आई हैव सॉलिड डाउट अगर इसमें क्वेश्चन आ गई ना सोर्सेस पे, then would be a bit difficult to answer this. Okay, fine. Let's see sources. When I talk about the sources here, that means while you want to give the money back, which kinds of funds you can use. So basically, we have two types of redemption. First of all, write down without premium, and second is with premium. Yes or no? When the redemption is without premium, we have to worry about only the capital source. You have to worry about the source of capital. That how will we pay the capital and which funds we can use. But when I say that it is with the premium, you have to think about the sources of both the things, both the components. Capital आप किससे pay करोगे and premium will be paid from what? Am I clear? So when I speak about, guys, the word capital, you have the two options. Either you use the profit, accumulated profit. That means it is nothing earned money. Accumulated profit is nothing but what? Earned money. Whatever you have earned from your profit. Okay, in most of the times it is known as the free reserve. अगर आपको पता हो तो किसी को जो free reserve कहते हैं, अरे हाँ है ना. And second, if you do not have the sufficient profit, the second option what the law is trying to give you is issue the fresh proceed of the another security. अरे भाई, issue another security, take the money and pay the old one. Are you getting my point? So that is about the fresh proceed of another security. Fresh proceed of the another security. All right. Now you please try to understand if you are paying. Let's say this is the balance sheet. अब थोड़ी balance sheet आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी यहाँ पे. So wait. All right. Suppose अरे भाई पूरा उसको यहाँ पे डाल देना था. Correct. इसको हटाओ. All right.
So look, when I'm just drawing the balance sheet here, suppose this is the balance sheet here, one, and yeah, this is two, and like this, of course. Got it? This is of course the asset side, and this is what liability side here. Got it? Here there is, let's say, equity share capital, what is nothing but 100 crores, and preference share capital, which is also showing 100 crores, and here I have the free reserves of 100 crores. Got it? So either you issue the new one, or यहाँ पे होगी cash. अब समझो. Let's say cash is right now just you can take just like a 10 crores अभी है. Got it? What options you have? Either you pay out of your profit, or you pay for the new one. What if guys you're bringing the new one? You went for the new preference share, you went for the new equity share, something like that. So when you went to the market for the new preference shares, so what will happen? नए preference share आएंगे. So guys, cash आएगी यहाँ पे 100 crore से assume, ठीक है? तो cash will be added by 100. So what's the new total in the cash now? 110. Yes or no? If I just make the total here, see what kinds of drama will happen. 110 is the cash, but out of this, or okay, in the balance sheet, what will happen? New preference share capital, 100 crores. This is what the picture होगा नहीं होगा. But by taking this 100, what I will do with this money? I am going to pay the old one. Yes or no? So again, guys, minus 100. Are you getting my point? Minus 100 होगा नहीं होगा यहाँ पे? बोलो भाई. और यहाँ पे ये जो प्रेफरेंशियल कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? That will get, I would say, striped off like this. Is this presentation correct? Maybe you want to know, sir, ये तो काफी सिंपल है, क्या पढ़ा रहे हो? बात ये पढ़ा रहा हूँ बेटा. What if I'm not going for the new preferential capital, but I want to utilize my accumulated profit? अब तो क्या होगा? देखो, समझ रहे हो बात को? तो assume that this preferential capital is not there, and this too didn't take place. So this is what the fresh situation. And now my profit, definitely whatever profit I have won, it will be in some investment form, no? It will be in some assets form, maybe in the data form, fixed assets. कहीं पे तो मेरा profit पड़ा होगा. Assume I have invested in some securities. My profit is lying over there, 100 crores. And I want to pay my old preferential capital. तो क्या एंट्री होगी? My investment I have to sell. तो वो भी बात आप बैलेंस शीट में देखो. मुझे ये कैश यहाँ से माइनस कर देना पड़ेगा. ये इन्वेस्टमेंट मेरा जीरो हो जाएगा. Yes or no? And that 100 crores what I sold now it get converted to cash. Is this true or not? Is this true or not? Is this true or not? And this investment what I have sold, it is nothing but my free reserve. Because I told you that whatever profit I have invested in the investment. तो जो इन्वेस्टमेंट मैंने बेचा और जो पैसा आया वो अल्टीमेटली मेरे प्रॉफिट का पैसा है, तो वो मेरी फ्री रिजर्व है, ऐसा बोल सकता हूँ. अरे भाई आप समझ रहे हो, वो मेरा फ्री रिजर्व है. Now what I will do is this 100 crore rupees cash what I have derived from the investment selling belongs to free reserve. Now I will pay to my shareholders. तो अभी ये हो जाएगा ये, समझो, ठीक है. तो यहाँ से कैश चलेगी और यहाँ से क्या चला जाएगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. Is this presentation is correct or not correct? चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पढ़े होंगे थोड़े कुछ. Is this presentation correct or not correct? नहीं नहीं नहीं, ओवरऑल आइटम्स वाइज. ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेरा जीरो हो गया, ठीक है, बेच दिया मैंने. कैश मेरी 10 करोड़ बची है. क्यों? अरे 100 इन्वेस्टमेंट क्या है, 100 प्रेफरेंस शेयर के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. सो ओनली 10 करोड़ जो पहले था वही बैलेंस बचा है, तो ठीक है, यहाँ से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चली गई.
ऐसे होता है ना अकाउंटेंसी में. नाउ दिस इज व्हाट इज द लास्ट बैलेंस शीट. इज दिस प्रेजेंटेशन करेक्ट और नॉट करेक्ट? अरे भाई जो नहीं मतलब बाकी दूसरी एसेट हो गया, फिक्स एसेट मान ले भाई 190. चलो अब मैच हो गया. हियर 200 ओवर द 200. चलो अब दिस प्रेजेंटेशन इज रॉन्ग. तो बता सकते हैं क्यों? बिकॉज स्टिल इन द बैलेंस शीट आपको फ्री रिजर्व दिख रही है. व्हेन यू यूटिलाइज योर फ्री रिजर्व, how can it be appeared there? You tell me, in this entire example, what I said, I have paid preference share out of what? Fresh proceed or from free reserve? तो जब free reserve से मैंने पैसे पे कर दिए, the investment which was representing the free reserve, I disposed of. तो अभी ये बैलेंस शीट में क्या कर रहा है? As an auditor, won't you ask this question to the company? कि ऐसे ही टिक करके आ जाओगे? दिमाग लगाओगे ना? क्या ये क्वेश्चन नहीं बन रही है कि एफआर में से तो अपन ने पे कर दिया, तो एफआर तो खाली हो गया है, प्रॉफिट था अब नहीं है, तो ये अभी बैलेंस शीट में क्या क्या कर क्या रहा है इसको? सो माय डियर स्टूडेंट, कैपिटल बेस इज नॉट मैचिंग. अब देखो कैपिटल स्ट्रक्चर इज नॉट मैचिंग, तो ये प्रेजेंटेशन सही नहीं है. इन ऑर्डर टू करेक्ट द प्रेजेंटेशन गाइस, बाय एनी हाउ यू हैव टू नलिफाई दिस फ्री रिजर्व. कैसे करोगे बेटा? ये डाउट आपको आना ही चाहिए, एंड वी हैव द प्रोविजन फॉर दैट. इन ऑर्डर टू देखो, इन ऑर्डर टू नलिफाई दिस, हमें इसको जीरो कर देना होगा. In order to zero this balance, we have to transfer somewhere. Are you yes or no? So we are transferring this balance here, and the balance title what we are transferring, it is nothing but exactly. आपने ये अकाउंट में नहीं किया, इतना डिटेल में शायद मतलब उस हिसाब से आपको वोट लगा होगा. नहीं, यही तुम्हारे सामने पहले से है, देखो 100 ही था. अरे चलो होगा, फिर बाद में कुछ एडजस्टमेंट हुआ, अंत में तेरे पास 100 करोड़ था, उसमें से तूने प्रेफरेंशियल कैपिटल बेच दी, मतलब डिस्पोज ऑफ कर दी. तो अगर उसका इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया था, फ्री रिजर्व जीरो हो जानी चाहिए. इस और तो उसको जीरो करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई you have to transfer this balance. Now it doesn't deserve to call itself as what? Free reserve. Go to some other reserve, that's called the capital redemption reserve. Capital redemption reserve, CRR. So now in MCQ this question comes that under what circumstances while redeeming the preference shares it is mandatory to create CRR to the extent of the face value of the redemption. So answer to that question is, you have two options when you are going for the fresh proceed or when you are paying out of the accumulated profit. तो CRR का concept कब आएगा? जब आप प्रॉफिट में से पे करते हो तभी एफआर आएगा, तभी सीआरआर आएगा, अदरवाइज इट वोंट कम. Otherwise it won't come. Is the logic clear in everyone's mind? Okay, but yeah, the same thing I would like to just no such shares shall be redeemed except out of, and the word out of is written, that means the source from where? Out of the profits of the company which would otherwise be available for the dividend or out of the proceeds of the fresh issue. No such shares shall be redeemed unless they are fully paid up. हाँ वो तो सबको पता है, until they are fully paid up you can't redeem it. So you have to make them fully paid up first and then you redeem it. Where such shares are proposed to be redeemed out of the profits of the company, there shall out of such profits be transferred a sum equal to the face value, that means the nominal amount of the shares to be redeemed, to a reserve to be called as capital redemption reserve account. Is what this paragraph proves and what I am discussing here. It is the section 55 subsection 2 and clause C. नहीं समझे? तो अकाउंट में जब आप ये करते हो ना कि प्रेफरेंस शेयर्स आर पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट, यू आर ट्रांसफरिंग द नॉमिनल अमाउंट टू सीआरआर, वो वहां पे क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर आज ये प्रोविजन निकल गई तो अकाउंट की ट्रीटमेंट भी चेंज हो जाएगी.
नहीं समझे? समझ में आई बात? If it is from the fresh proceed, don't go. If it is other than fresh proceed, compulsorily you have to transfer that much face value to the CRR account. And what is the use of CRR? Just and just to issue the fully paid up bonus shares. CRR का और कोई यूज नहीं है, आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो टू पे बोनस शेयर्स. एम आई क्लियर? ठीक है. नाउ बिफोर आई गो टू द ब्रेक, अभी ब्रेक में जाना है बेटा, इसको इस पार्ट को खत्म कर लो, कर देते हैं. ध्यान रखिए गाइस, व्हेन आई टॉक अबाउट द कैपिटल है, I was here. Capital guys, the same point. You have either you pay out of the profit or you go with the fresh issue. ठीक है. बट प्रीमियम में थोड़ा पंगा होगा भाई. प्रीमियम थोड़ा कंट्रोवर्शियल है पढ़ने में, ध्यान रखना. कंट्रोवर्शियल मींस लाइक थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना है आप लोगों को. So when I talk about the word premium, so what happens in premium? Because when I say premium, just not only 55, but 52 also gets attracted. 52 is nothing but yesterday I told security premium account or capital reduction वाली पूरी point 52 subsection 1, 52 subsection 2, 52 subsection 3 वो पूरी डिटेल में करवाई थी मैंने. So guys, there are, when I say that you want to pay premium, so what should be the sources of premium? So actually law says that when you want to pay the premium, you have to pay out of प्रॉफिट. ठीक है. और आप समझ रहे हो बेटा, यू हैव टू पे आउट ऑफ प्रॉफिट. चलो एक काम करो, मैं क्वेश्चन पूछूं आपको, कैन यू यूटिलाइज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू पे द प्रीमियम? बिकॉज इन द बैलेंस शीट यहाँ पे एसपीए तो होता है. लेट्स से एसपीए शोइंग हियर, लेट्स से 25 करोड़. कैन यू यूटिलाइज दिस 25 करोड़ टू पे द प्रीमियम ऑन दिस प्रेफरेंशियल रिडीम्पशन? नहीं. Answer can be yes as well as no. Depends on the compliance of section 133, which is nothing but accounting standards. करवाया था कल, याद करो. 133 doesn't applicable, no accounting standards. 133 applicable, accounting standards. अरे करवाया था ऐसा. So same because if I talk about the utilization of the premium or sources of the premium, the whole classification is divided into these two parts. If 133 doesn't apply or if 133 applies. Got it? If the 133 does not apply, the sources of the premium will be profit or security premium account. So yesterday we tried to understand, look at, मैं अभी आपको इसी क्लास में बता दूं. देखो ऑनलाइन के ये मजा है. हाँ याद आया कुछ? If 133 doesn't apply, you can use the security premium account to pay the premium on redemption. अरे भाई कल ही किया था इस चीज को. But it is not available if 133 is applicable. So guys, let me come down here. ठीक है. Over here, if 133 is applicable, then only one option is available, and that is what? You can use only profit to pay the premium. You cannot touch security premium account. Make sense or not? बट इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आई ना आप लोगों को तो तकलीफ हो जाएगी. Got the point or not? When accounting standards are applicable, then you must have to comply. If you do not comply, then there are those restrictions. You can't use security premium account for any purpose. It will be just as a decoration in your balance sheet. कुछ नहीं, बस वही है कि आपकी वो फैसिलिटी, हाँ उसमें ऑडिट में पढ़ाया गया होगा आपको. सिर्फ ऑडिटर को रिपोर्ट करना है और डायरेक्टर को अपने डिटेक्टर्स की रिपोर्ट में उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि क्यों फॉलो नहीं किया. हाँ उसकी पनिशमेंट भी है, पेनल्टी भरनी पड़ेगी और तो क्या. नहीं नहीं नहीं, गलत समझ रहे हो. To understand these things, you have to understand 52 first. पहले 52 की फिलोसॉफी समझो. 52 में 133 पे आ जाओ.
चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो क्या लिखा है। अच्छा, इसके लिए मैं कभी आई डिडंट वांट टू गो इन दिस डिस्कशन, बट लेट मी टेल यू, in fact there was one misinterpretation, there was one misinterpretation because while drafting the law didn't clarify this, that what is the exact interpretation of this thing. देखो लॉ ने ये लिखा है 133 applied and complied, the security premium account can be used for bonus shares, buyback and to write off the discount and commission. But there were two different interpretations to this. Interpretation number one, look at the words, 133 applied and complied by the company. Company can utilize security premium account for these three purposes also. ये इंटरप्रिटेशन हुआ, इसके लिए भी कर सकता है ऑल्सो। अब सेकंड इंटरप्रिटेशन बताओ, 133 अप्लाइड एंड कंप्लाइड, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल फॉर ओनली दिस थ्री। तो दो इंटरप्रिटेशंस आर पॉसिबल, ओनली दिस थ्री और दिस थ्री ऑल्सो। बताओ क्या फर्क है इन दोनों इंटरप्रिटेशंस में? इफ आई से ऑल्सो, नहीं, सो आउट ऑफ दिस फाइव दिस थ्री आर ऑल्सो, तो ये टू तो टेकन एज ग्रांटेड हो गया। इफ यू कंप्लाई डोंट कंप्लाई, ये तो पहले भी थे अभी भी रहेगा। ये तीनों भी मिल सकते हैं, मतलब ये दो तो वैसे ही मिलने वाला है, एक ही इंटरप्रिटेशन हुआ। दूसरा, ये तीन ही मिलेंगे, तो पहले भी ये नहीं मिलेंगे अभी भी ये नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो? चलो ऐसे समझो, अरे यार ये थोड़ा है ना, इसमें लॉजिक का इशू है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस, सपोज योर पेरेंट्स टोल्ड दैट बेटा देयर आर 5 chocolates, one is Cadbury, out of those 5 one is Cadbury, other is Kit Kat, Nestle। ये दो चॉकलेट्स है। अब ये दो सेंटेंसेस आ रहे हैं, तो बेटा होमवर्क खत्म कर, तो दूसरे तीन भी मिलेंगे। होमवर्क खत्म कर तो दूसरे तीन भी मिलेंगे, मतलब ये जो पहले दो है वो तुम होमवर्क करो या ना करो वैसे मिलने वाले हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये हुआ। अगर ये को बेटा होमवर्क खत्म कर तो ही वो तीन मिलेंगे, नहीं ऐसे नहीं, ये होमवर्क खत्म कर तो ये तीन मिलेंगे, ये भी नहीं, तो ही ये तीन मिलेंगे। तो उसका मतलब ये हुआ कि तुम होमवर्क खत्म करो या ना करो वो दो तो नहीं मिलने वाले तुम्हें। तुम समझ रहे हो? ये भी मिलेंगे और सिर्फ यही मिलेंगे। होमवर्क खत्म कर, होमवर्क खत्म कर तो ये तीन मिलेंगे, ये तीन ही मिलेंगे। नहीं किया तो ये तीन भी नहीं मिलेंगे। तो मतलब वो जो दो है वो पहले भी नहीं मिलने वाले थे अभी भी नहीं मिलने वाले। तो इसमें कंफ्यूजन था बेटा, पीडब्ल्यूसी तक ने गलत इंटरप्रिटेशन निकाल दिया था। मैं भावेश और सुनील सर बैक टू बैक 3 दिन डिबेट किए इसके ऊपर, बिकॉज प्रीमियम इज सच अ कंपोनेंट व्हिच कम्स इन लॉ, अकाउंट्स एज वेल एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सही ट्रीटमेंट क्या है पूछा मुझे, क्या सर आपका क्या राय है, एंड आई वाज ब्लैंक, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी ना, नया नया लॉ आया था उस टाइम। तो दिस टू ऑल्सो, लाइक दिस थ्री ऑल्सो और ओनली दिस थ्री, उसके बीच का फर्क है। इफ यू गो विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस थ्री ऑल्सो, तो दोस टू आर टेकन एज ग्रांटेड, विदाउट कंप्लाइंग इट वाज अवेलेबल, आफ्टर कंप्लाइंग आल्सो अवेलेबल, but only these three, so these two are not available before complying, in fact these two are not available after complying। थोड़ा कुछ ज्यादा हो रहा है, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो असली इंटरप्रिटेशन है ओनली वाला। That means if accounting standards are applied and complied, then you can use this three facility, these and this. But it is applied and you didn't comply, तो ये तीन भी नहीं मिलेंगे। तो ये दो तो पहले भी नहीं मिल रहे थे अभी भी नहीं। Exactly. So this is called the complete ban. क्या बोलते हैं? And now you come down to section 55 in this context. If 133 accounting standards are applicable, so it doesn't matter whether you comply or doesn't comply accounting standard. Security premium account is not available if you don't comply the accounting standards. It is not available even if you comply the accounting standards. So only option जो बचा वो profit है भाई।
ये जनरली मैं नहीं समझा था बच्चों को, क्योंकि ये प्रोफेशनल लेवल का है भाई, ये जरूरत भी नहीं है आपके लेवल की। आप समझ रहे हो? सो 52 यू कैन इंटरप्रेट बाय इंटरसेप्टिंग 55। तो ये मेरा थोड़ी मानना है, चलो मैं आपको खुद बता दूं, यहाँ पे ये देखो, look at this, the word premium is written over here. In case of the class of companies as may be prescribed and whose financial statements comply the accounting standards for such class of the companies under section 133, the premium payable on redemption shall be provided out of profits. But look at this. Provided if premium any is payable on redemption on such preference shares before the commence, नहीं ये अलग है, ये अलग है, हाँ. In a case not falling under clause 1, that means your books of accounts not need to be comply with the accounting standards. If you are not falling in subsection 1, like sub clause 1, अगर आपकी कंपनी इस 1 में क्वालिफाई नहीं हो रही है, 1 में कौन सी क्वालिफाई होगी? Which need to follow 133. So it means that you see the second clause. If you do not fall under 1, the premium, whatever is payable, shall be paid out of profits or सो अगर आपको 133 कंप्लाई नहीं करना, तो बेटा देखो इतने सारा पढ़ू, इससे अच्छा मैंने शॉर्टकट में बता दिया था. अगर 133 इज नॉट देयर, प्रॉफिट और एसपीए, बट इफ इट इज देयर देन एसपीए इज नॉट इन द पिक्चर. ठीक है, बट दिस रूल हैज वन स्मॉल एक्सेप्शन, because as soon as this provision was introduced, the all people started complaining. What about the preferences what we issued before commencement of the Companies Act 2013? Some preferences you issued in the year of 2008, where you promised the persons that I will redeem the preferences with the premium, and I have only one source, security premium account, to redeem the premium, to pay the premium. And now law says if 133 applies, you can't use security premium account. Is it fair or unfair? Fine, you put a ban on us after the new preference shares what we are issuing after the 2013. तो वो ठीक है, पहले के जो कमिटमेंट हो चुके हैं उसके ऊपर क्यों आप हमको मना कर रहे हो? And that's why they came up with the exception. क्या लेके आया? So there is one proviso inserted over here. देखो ये proviso क्या कहता है? Provided also that the premium, if it is payable on redemption of any preference shares issued before the commencement of this act, even if this 133 is applicable, even if accounting standards are applicable, shall be provided out of the profits or security premium account. So guys, exception क्या हुआ? जो old securities है, when I say old preference shares, इसका मतलब आपको ये लेना है that shares which had been issued before the commencement of this act, then fine, SPA is allowed, profit is also allowed. So guys, can I say it is just a temporary provision? Why temporary provision? As soon as in India all the preference shares are redeemed, तो फिर इस provision का कोई मतलब नहीं रहेगा. Are you getting my point? Yes or no? So guys, with this I'm telling you section 55 I want to conclude. Trust me guys, 55 जितना आसान लग रहा है उतना ही डिटेल में है, उतना ही डिटेल में है. Am I clear? So whatever I wanted to teach, the significant points from concept point of view as well as from the I would say examination point of view मैंने करवा दिया है. समझ में आई बात? 55 को 4 स्टार कर देना, काफी इंपॉर्टेंट है. But they are not asking frequently. That's was the big problem for them. ठीक है बच्चा, भूख लगा होगा आप लोगों को? हाँ जी, सॉरी मैं थोड़ा खा के आया यार दबा के.